Welcome to Biomindscape. Today we are going to know about body fluids and circulation. We all know blood is a special connective tissue constituting of the fluid matrix, plasma and various types of cell. So plasma is a straw-colored viscous fluid. It consists 55% of the blood. 90 to 90% of the plasma is water and protein, and it contributes 6 to 8% of it. Fibrinogen, globulin, albumin are the three major proteins. Fibrinogen are needed for clotting and coagulation of the blood. Globulin are involved in defense mechanism of the body, and albumin help in osmotic balance. Plasma also contains small amount of mineral like sodium, calcium, magnesium, chlorine and HCO3. Now tell me what is HCO3? Then glucose, amino acid, lipid, etc. are also present in the plasma as they are always in the transit in the body. The factor of coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factor, it is called the serum. Then erythrocyte, leukocyte, platelets are collectively form an element and they constitute nearly 45% of the blood. Erythrocyte or RBC are the most abundant of the cell. There are 55 millions of RBCs of the blood. RBCs are formed in a red bone marrow in an adult. RBCs are devoid of a nucleus in most of the mammal and are biconcave in shape. They have a red colored iron containing complex protein. It is called as hemoglobin, hence the color and name of the cell. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood, and these molecules play a significant role in the transport of the respiratory gas. RBC have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, that is the graveyard of the RBC. Then leukocytes, they are also known as WBCs or white blood cells. As they are colorless due to the lack of hemoglobin, they are nucleated and are relatively lesser in number with average 6,000 to 8,000 mm³ of the blood. Leukocytes are generally short-living. We have two main categories of WBCs, granulocytes and agranulocyte. Neutrophil, eosinophil and basophil are different types of granulocyte, while lymphocyte and monocyte are agranulocyte. Neutrophils are the most abundant cell, 60 to 65% of the total WBCs, and basophil are the least, that is 0.5 to 1% among them. Neutrophil and monocytes, 6 to 8%, are phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body. Basophils secrete histamine, serotonin and heparin, etc. and are involved in the inflammatory reaction. Eosinophils are 2 to 3%, resist infection and are also associated with allergic reaction. Lymphocytes, 20 to 25%, are two major, B and T type. Both the type are responsible for immune responses of the blood. So platelets are also known as thrombocytes and are cell fragments produced from the megakaryocyte, special cell in the bone marrow. Blood normally contains of the platelets, and the platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation of clotting of the blood. A reduction in the number can lead to the clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood in the body. Now let's know the blood group. ABO blood group and Rh negative are widely used all over the world. So ABO grouping is based on the presence and absence of the two surface antigen chemical that can induce immune responses on RBCs, namely A and B. Similarly, plasma on different individuals contain two natural antibodies, protein produced in response to the antigen. The distribution of the antigen and antibodies in the form of four types of blood group: A, B, AB and O.
And you probably know that during the blood the transfusion, any blood cannot be used. The blood of the donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid several problems of clumping, destruction of RBC. The donor's compatibility is shown. Now you can see the antigen of RBC and antibodies in the plasma and the donor's group and the blood group. A is compatible, your antibodies to plasma. B, antigen. Now this is an important table. You should know that the antigen of RBC and antibody in plasma and the donor's blood group. This is very important, and compatibility of the donor and the blood groups. From the above mentioned table, it is an evidence that O blood group can donate a person with any other, that is universal donor, and universal acceptor is AB blood group. So RH grouping, another antigen, RH antigen similar to one present in rhesus monkey, the RH full form, and it is observed in the surface of the RBCs of majority, near 80% of the human. Such individual are called RH positive, and those whom the antigen is absent, it is known as RH negative. So RH negative person, if exposed to the RH positive, will form specific antibodies against RH antigen, and therefore RH group should not also be matched before transfusion. A special case of RH incompatibility, that is mismatch, has been observed between the RH negative blood group of a pregnant mother with RH positive blood group of the fetus. So RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood group of the mother in the first pregnancy, as the two blood group well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of RH positive blood from the fetus. So in such case, the mother start preparing antibody against the RH antigen in her blood, and in this case her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother RH negative can leak into the blood of the positive one and destroy the fetal RBC, and this could be fatal to the fetus and could cause several anemia, jaundice to the baby, and this condition is called erythroblastis fetalis, and this can be avoided by administering antigen negative RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child. Then coagulation of the blood. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops the flow after some time. Do you know why? Because the blood exhibits the coagulating or clotting, and it is responsible for the injury, and this mechanism is to prevent the excessive loss of the blood in the body. So you would have observed a dark reddish brown scrum form at the site of the cut or injury over a period of time, and this is a clot of coagulum formed mainly in the network of thread called fibrins, and which lead to the death and damage of the elements of the blood and are trapped. Fibrins are the formed by the conversion of an inactive fibrinogen in the plasma by an enzyme thrombin. So thrombin in the turn form the another inactive substance present in the plasma called prothrombin, and the enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction, and this complex is formed by a series of linked enzyme reaction cascade processing involve a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulate the placenta in the platelets in the body. An injury and trauma stimulate the platelets in the body to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factor released by the tissue at the site of the injury, also called initial coagulation. And calcium ion plays a very important role in this clotting. Now lymph, that is a tissue fluid, as a blood pressure through the capillaries in the tissue. Some water along with many small water soluble substance move out into space between the cell of the tissue, leaving the large protein and most of the forming element in the blood vessel, and this fluid result out is called the interstitial fluid or the tissue fluid, and it has a same mineral distribution as that in the plasma. Exchanging of nutritious gases, example between the blood and the cell, always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called the lymphatic system
collecting this fluid and draining it back to the major veins. So this fluid present in the lymphatic system is called lymph, and lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune response of the body. So lymph is also important carrying for the nutrient, hormone, etc. Fats are absorbed through the lymph and in laterals present in the intestinal villi. So, circulatory path, the next topic. The circulatory path are of two types. Open circulatory system is present in arthropods, mollusks, in which the blood is pumped by the heart, passing through the large veins into the opening space or the body cavity called the sinus. Then annelids and chordates have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through the closed network of the blood vessel, and this pattern is considered to be more advantageous as flows of the fluid can be more precisely regular. All vertebrates possess a muscular chamber heart. The fish have two-chambered heart with an atrium and a ventricle. Amphibians have and reptiles have three-chambered with two atrial and a single ventricle, whereas crocodile, bird and mammal possess four-chambered heart with two artery and two ventricle. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gill and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart, that is a single circulation. In amphibian reptile, the left atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs and skin, and the right atrium and get deoxygenated blood from other parts of the body. So however, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood in complete double circulation. In bird and mammals, oxygenated and deoxygenated blood is received by the left and the right atria respectively and passes on the ventricle of the same side. So the ventricle pumps it out without any mixing up, and that is two separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence their animal have double circulation. And after that we will know about the human circulatory system. So let's summarize the double circulation. Why it is called double circulation? Because the heart passes the blood twice and complete circulation takes place. Once after the systemic return from right atrium to the lungs, and again after the pulmonary return left atrium to the body. So it ensures a complete separation of oxygenated and deoxygenated blood and maximizing the efficiency of oxygen. So it maintains different pressure. For example, the pulmonary, that is the lower, and systemic, that is the higher circuits, protecting the lungs while supporting the body needs. So it supports the metabolic demand of a warm-blooded, that is endothermic animal like humans. So let's know the types of two functional circuits. The circulatory system, that are the pulmonary and the systemic. Now what is systemic circulation? The system supply oxygenated blood to all the tissues of the body except the lungs. The left ventricle pump oxygen-rich blood into the aorta. Blood is distributed by arteries, arterioles and capillary. When oxygen and nutrition are delivered to the tissue and the waste product like CO2 are collected, the deoxygenated blood is returned to the right atrium by the superior and inferior vena cava. This circuit functions under high pressure to ensure the effective delivery of the nutrient and oxygen to various tissues. And what is pulmonary circulation? It is responsible for the gas exchange. The right ventricle pumps deoxygenated blood into the pulmonary artery which carry it into the lungs. And in the pulmonary capillary, blood unload CO2 and pick up the oxygen. So the oxygenated blood is returned to the left atrium via the pulmonary vein, and this circuit operates under lower pressure to prevent the damage to delicate lung tissues and to ensure a proper time of gaseous exchange. So in human and other mammal, the circulatory system is divided into pulmonary and systemic circulation. Chapter in Hindi. I have made a summary of the chapter. So let's see the summary. सो आज हम जानेंगे बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन चैप्टर के बारे में. सो बॉडी फ्लूइड जो है इसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है? ब्लड.
सो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। इसका मेन, ये किस चीज़ से बनता है, प्लाज्मा 55%, ये जो कि येलो कलर का लिक्विड पार्ट है, 90 to 92% वाटर से बना है, पानी से बना है, 7% प्रोटीन से बना है। प्रोटीन में क्या क्या आ रहा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। फिर इसमें और कौन से एलिमेंट्स है, 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलेंगे और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। यह आरबीसी क्या है, बायकॉन्केव, जो कि जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है ह्यूमन बीइंग में, और इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का है और इसका फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। डब्ल्यूबीसी जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके दो टाइप्स है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। सो ग्रैनुलोसाइट जो है ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल से बनता है, और ए ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट से बनता है। सो जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी लाइफ स्पैन 7 डेज की है, और लिम्फेटिक फ्लूइड होता है लिम्फ में। सो ये प्लाज्मा से फिल्टर होकर निकलता है, और ऑक्सीजन कम और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे होता है। फिर इम्यून रिस्पॉन्सेस में काम आता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें दो सिस्टम है, एबी और आरएच फैक्टर। सो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, मतलब जो देने वाला, और लेने वाला एबी, मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब सारे ब्लड ग्रुप जिसको सूट होंगे वो एबी पॉजिटिव। फिर आरएच इनकम्पेटेबिलिटी, ये ब्लास्टोसिस फेटल नाम का एक ये है जिसमें आरएच इनकम्पेटेबिलिटी टॉपिक है, जिसमें आरएच इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में बताया गया है। जैसे कि मदर का अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको, अगर उसका जो फीटस है उसका आरएच पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलेंगे। फिर इसके बाद में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे आरबीसी और ब्लड के बारे में। सो हमें पता है कि ब्लड जो है, ये प्लाज्मा जो है ये पानी से बना है 92% फॉर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तो एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आरबीसी जो है मतलब एरिथ्रोसाइट, इसका मेन फंक्शन है O2 ट्रांसपोर्ट व हीमोग्लोबिन। नॉर्मल काउंट जो है इसका अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन पर mm³ है, और हेमाटोक्राइटिक दैट इज इक्वल टू % ऑफ आरबीसी इन ब्लड, मेल्स में 45% और फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 42%। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है मैच्योर आरबीसी में, सो बहुत सारा ये स्पेस है हीमोग्लोबिन के लिए। फिर लाइफ स्पैन कितनी है आरबीसी की, 120 डेज, और ये स्प्लेन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्प्लेन डिस्ट्रॉय कर देता है इसे। फिर डब्ल्यूबीसी जो है इसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये डिफेंस सेल की तरह काम करता है। इसकी नंबर बहुत कम होती है डब्ल्यूबीसी की, 5000 अप्रॉक्सीमेटली टू 10,000 पर mm³। फिर ग्रेनुलोसाइट्स जो होती है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, कम होती है, शॉर्ट लिव्ड लाइफ स्पैन होती है, और इसकी इननेट इम्यूनिटी होती है, मतलब वो इम्यूनिटी जो बहुत से हमारे पास है उसे हम इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर ए ग्रैनुलोसाइट कौन सी है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी है, मतलब मतलब एक इंसान के पैदा होने के बाद में जो भी डिजीज़ आती है उसको, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी पैदा होती है हमारे अंदर, उससे बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। फिर प्लेटलेट्स कौन सी है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स बोलेंगे, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट है, जो कि मेगा कैरियोसाइट से बनती है। फिर ब्लड क्लॉटिंग में ये काम करते हैं वाई थ्रोम्बिन और फाइब्रिन के थ्रू। फिर हार्ट की एनाटॉमी में बेसिक स्ट्रक्चर 4 चेम्बर है, राइट एट्रियल, लेफ्ट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें वॉल्स है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्स उसमें क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लो होगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड। सेमिलुनर वॉल कौन सी है, एओर्टिक और पल्मोनरी। डबल सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी कहाँ से होगा, राइट वेंट्रिकल से लंग, लंग से लेफ्ट एट्रियम, और सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड और वहाँ से राइट एट्रियम।
हाई ऑक्सीजन का सप्लाई होता है टिश्यू में, और इफ़िशिएंट है वेस्ट रिमूवल के लिए। फिर कार्डियक साइकिल इम्पॉर्टेंट है। कार्डियक साइकिल में क्या है, एक साइकिल हो रही जो कि 0.8 सेकेंड की है, जिसमें 3 फेज़ है, एट्रियल सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सो एट्रियल सिस्टोलिक कितना है, उसका जो टाइमिंग है एट्रियल सिस्टोलिक वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 सेकेंड्स है, जो कि ब्लड में मूव करता है टू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 सेकेंड्स, जो कि ब्लड पंप करता है टू द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। देन डायस्टोलिक का अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम है, 0.4 सेकेंड, जो कि हेल्प करता है रिलैक्सेशन के लिए। फिर हार्ट के 2 साउंड्स हैं। पहला जो है वो एवी वॉल्व क्लोजर की वजह से होता है, जिसे हम लब बोलेंगे, और जो सेमिनुलर वॉल्व क्लोजर के वजह से जो साउंड तैयार होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे हम डब बोलेंगे। सो ये डायस्टोलिक फेज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो में इम्पॉर्टेंट है, और हार्ट खुद ब्लड डायस्टोलिक में लेके आता है। फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ऑटो रिदमिसिटी बोलते हैं इसे। हार्ट बीट खुद से करता है, जैसे एसए नोड पे डिपेंड करता है। एसए नोड क्या है, पेसमेकर, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80, और एवी नोड डिले सिग्नलिंग करता है 0.1 सेकेंड्स। बंडल ऑफ हिस विच गिव राइज टू द पर्किंजन फाइबर स्प्रेड सिग्नल फास्ट टू द वेंट्रिकल्स। जैसे आयन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्शन पोटेंशियल के लिए। फिर ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्या शो करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करता है, और खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करता। इसमें 3 टाइप की वेव्स है, पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव। सो पी वेव का क्या काम है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस का क्या काम है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव का वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो क्लिनिकल कंडीशंस लाइक हार्ट अटैक, एमआई, फिर ये हम ईसीजी के थ्रू, पैटर्न्स के थ्रू देख सकते हैं। फिर ब्लड प्रेशर और इसका कंट्रोल, नॉर्मल बीपी कितना है, 120/80 mm/Hg। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बैरो रिसेप्टर के थ्रू, फिर आरएएस सिस्टम के थ्रू, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। फिर जानते हैं क्या होता है ये एमएपी, मीन आर्टीरियल प्रेशर। सो दिस मीन आर्टीरियल प्रेशर मतलब पूरी कार्डियक साइकिल के दौरान आर्टरीज में ब्लड का एवरेज प्रेशर, जो ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रेशर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो देयर इज़ अ फार्मूला फॉर दैट, MAP इज इक्वल टू डायस्टोलिक BP प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो अगर ब्लड प्रेशर हमारा यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल 120/80 mm/Hg है ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है। सो क्या करेंगे, 120 को माइनस करेंगे 80 से, तो हमें मिलेगा 40। सो MAP क्या होगा, 80 प्लस हम फॉर्मूला में उसे ऐड कर देंगे 1/3, फिर 40 मतलब पल्स प्रेशर को ऐड इसमें ब्रैकेट में डाल दिया। सो हमें मिला 80 प्लस 13.3, और इसे ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलता है 93.3 mm/Hg। सो डायस्टोलिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कार्डियक साइकिल में डायस्टोलिक दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है 2/3 टाइम्स, इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर का कंट्रीब्यूशन मैप में ज़्यादा होता है। सो नॉर्मल मैप रेंज 100, पी वैल्यू जो होती है वो 100 है, मीनिंग नॉर्मल ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड मिलता है। फिर अगर वो ग्रेटर दैन 60 है तो ये एक डेंजर का सिंबल है, क्योंकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हाइपो परफ्यूजन हो गया। और अगर ग्रेटर दैन 110 है, 110 है, तो हाई बीपी या फिर ऑर्गन डैमेज का रिस्क हो सकता है। सो क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है, ब्रेन, किडनी और हार्ट, इन सबको कांस्टेंट ब्लड फ्लो चाहिए होता है, तो इसलिए डॉक्टर ICU में मैप मॉनिटर करते हैं। How we will learn this, map is equal to DPP plus 1/3 PP, that is where the pulse pressure is equal to SBP minus DBP. So here is a short revision of the body fluids and the blood circulation.